कोविड 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 एंड कोविड। दुनिया भर में कोविड की वजह से सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, स्पेशली अमेरिका में और इंडिया में। अमेरिका में पिछले 6 दिनों में तकरीबन 1 मिलियन केसेस आए हैं, विच मीन्स अब तक फरवरी ऑनवर्ड्स 11 मिलियन आए और उस 11 में से 1 मिलियन लास्ट 6 डेज में आए। सो यू कैन इमेजिन है कितनी तेज़ से ये कोविड फैल रहा है। वैक्सीन आ चुकी हैं इसकी, बट आई डोंट नो इफ आई ट्रस्ट दोस वैक्सीन बिकॉज दीज वैक्सीन कमिंग वेरी फास्ट। बहुत जल्दी बनाई उन्होंने वैक्सीन, इतनी जल्दी नहीं बनती, उनको बनाने में साल लगता है, विच मीन्स उन्होंने ट्राई पूरी तरह नहीं की इसकी, और इट कुड हैव lot of side effects, but at least something better than nothing. So let's see, hopefully they're gonna start distributing the vaccine soon. Breaking news actually just came in. डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, मतलब उनके वली अहद के जूनियर के ट्रम्प के जो वली अहद हैं, उनको भी कोविड हो गया है। जुलियानी जो कि लॉयर हैं एंड एक्स मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, उसके बेटे भी कोविड हो गया है, और माइक पेंस के जो स्टाफ है उसमें भी काफ़ी लोगों को कोविड हो गया। तो तकरीबन 13 या 14 लोगों को कोविड हुआ है उस एरिया में, एंड एवरीबडी इज़ गॉन इनटू आइसोलेशन। सो देखें क्या होता है। बहुत सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स। और काफ़ी स्टेट्स ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुकी हैं। कैलिफोर्निया में लॉकडाउन हो चुकी हैं, जर्सी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद हो चुके हैं। सो दे क्लोज द स्कूल बट स्टेट हैजंट क्लोज्ड एंड येट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। I am Shoaib Qureshi with Say It Like It Is with Mr. Q from New York. Oh, sorry. शावर ले रहा था तो उसका फॉसेट बंद करना भूल गया, तो था was just trying to turn off the faucet from here. रिमोट के साथ हो जाता है, ये hot and it's cold, I can turn it off and turn it on. Back to COVID. कोविड जो है, सब एक तो काफ़ी लोग इससे बीमार हो रहे हैं, और दैट टोल इतना बुरा कम नहीं है, लेकिन मोर डेंजरस विच इज़ नॉट टू मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, आफ्टर इफेक्ट्स। कि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि कोविड होने के बाद सेहतियाब हो गए हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो इट्स नॉट दैट गुड। काफ़ी लोगों को, हर बंदे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हो रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो कि पता नहीं कितने अर्से तक चलें, हो सकता है साल तक चलें, हो सकता है परमानेंट हो जाएं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, जस्ट नॉट जस्ट दैट, उसके जो दूर के जो असरात हैं वो भी हैव टू सी इट, कि जो सेहतियाब होने के बावजूद भी जो लोगों के साथ हमेशा रहेगी जो इश्यूज़ हैं कोविड होने के बाद। So we have to be careful, especially brain fogging. A lot of people having issues brain fogging. Brain fogging is just like a kind of memory loss. You don't remember something, or short memory. So these kind of stuff. A lot of people are complaining about brain fogging. So obviously ये जो है कोविड जो है सेहतियाब होने के बावजूद भी it's still could be dangerous. There's another virus which has been out there for a while and nobody's talking about it. It's NS18. I don't know if you heard of that. NS18 is very contagious. लेकिन NS18 आम लोगों को नहीं होता है, खाली लीडरान को होता है. As somebody who don't know what NS18 means is Nawaz Sharif 18 COVID. मुझे क्यों निकाला? Yeah, that's a dangerous virus जो कि somehow Trump को लग गया यहाँ पे. और जब से वो हारा है, he's keep talking about it कि I'm not gonna give up. मुझे क्यों निकाला? So लीडर और बाकी जो लीडर हैं दुनिया के, they have to be careful to stay away from this वायरस। और ज़्यादा डेंजरस बात यह है कि इसकी कोई वैक्सीन है नहीं और ना कोई निकल सकती है। सो मुझे क्यों निकाला? सो पीपल हैव टू बी केयरफुल दैट NS18 से दूर रहने के लिए। कोविड-19 से तो फिर भी आप सेहतियाब हो जाएँ, बाद में दूर अंदेश आपके जो दो असर आते हैं वो रहें थोड़े बहुत, लेकिन NS18 जो है it's very dangerous. Stay away from it. तो ये ट्रम्प साहब ने बड़ी उधम मचाई हुई है, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अभी तक उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की है, एंड ही इज़ फाइलिंग लॉ सूट ऑल ओवर द कंट्री, Pennsylvania, Michigan, Georgia, everywhere. So but he has no grounds, but he's still filing क्योंकि वो NS18 उसको लगा हुआ है, तो उसकी वजह से the way he's reacting because NS18 लगा हुआ है. And he's getting dangerous day by day. He tried to start the war with Iran, which I mentioned to you
आप लोग को 2-3 एपिसोड पहले मैंने बताया था कि ही इज़ गोना डू समथिंग, लेकिन उसके पास जो जनरल्स और पेंटागन वगैरह जो हैं, दे डिडंट एग्री विद दैट एंड दे टोल्ड हिम दे शुडंट डू इट एंड नाउ ही इज़ लुकिंग टू डू समथिंग एल्स। ये जाने से पहले ही इज़ गोना ट्राई टू पुट लेट ऑन एज मेनी फायर्स एज पॉसिबल, जितनी आग लगा सकेगा जाने से पहले लगा के जाएगा, क्योंकि चाहेगा कि वह बाइडन आए तो इन्हीं चक्करों में फंस जाए और दैट्स विल गेट बिजी विद इट। सो जैसे होता है ना, हमारे होते हैं ना स्पॉइल बच्चे होते हैं ना कि ना मैं खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, so that's exactly what is same as I said as NS18, just नवाज शरीफ वाला वायरस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, so he's exactly what he's doing. So he's trying to create a lot of problems. अफगानिस्तान से भी ट्रूप्स मंगा रहा है, मेरे ख्याल में 1500 ट्रूप्स शायद उड़ाए हैं या 2500, कुछ न्यूज़ आ रही है 2500, कुछ कहीं 1500, but it's gonna be mass. अगर ये is gonna bring the troops out so fast, it's gonna be mass in Afghanistan. Same thing is trying to bring the troops from Somalia also. So plus he's gonna do something. He's not gonna go that easy. So what he's gonna do, anybody's guess. He's a crazy man. He'll do whatever he can do it. But hopefully, the deep state, they're trying to hold him back. That he shouldn't do anything, but he shouldn't do anything which he shouldn't be doing it. So they came. Let's see what happens. Hopefully, we'll get some good news. के वायरस जान छूट गई उसकी, नहीं छूटी ट्रम्प की, but doesn't look like it. So let's see what happened. I'll get back to you on the latest news on that one. Before we change the topic, I gotta get back onto this divide America. कि जो अमेरिका जिस तरह से डिवाइड हुआ है, it's like black and white, and that's also dangerous. I did not know. I knew there were some racism is there is some Republican and Democrat, but I don't know. Republicans उनकी भी दो किस्में हो गई Republican, एक जो है थोड़े रियल रिपब्लिकन है और दूसरे जो हैं ये ट्रम्पेट है, जिसको ट्रम्प वाले रिपब्लिकन को ट्रम्पेट कहते हैं. So जो ट्रम्पेट जो है they coming out like left and right from the कोने खुदरों से निकल के आ रहे हैं. They're so dumb and stupid. I'm sorry to say that, but they are like जैसे, बल्कि हमारे जो पाकिस्तान का जो villagers हैं, they probably have more शऊर, political शऊर than these people. These people have no clue. They like Trump because he's in favor of guns, because they love guns, and he talks just like them. So they think he's one of them. But the way you see it, I'm like shocked the way America is right now. It's like I knew कि हैं थोड़े बहुत इस टाइप के लोग, but इतने, I'm surprised, and that's not a good news. And hopefully things get better. By the way, I got my gun finally. I got one gun, and I'm still waiting for trying to still buy a couple of more guns. But at least I got one gun, so I probably can defend myself a little bit if it comes down to it. Now back to Pakistan. ओबामा साहब की बुक आई है, अब आई थिंक इसको प्रॉमिस्ड लैंड, और उसने जो क्या बोलते हैं पोल खोली है पाकिस्तान और इंडिया की. इट्स इंडिया, आई मीन फेयर इनफ, पाकिस्तान स्टिल फेयर इनफ, बट एटलीस्ट इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने फ़ोन करके मुबारकबाद नहीं दी कि जी मुबारक हो कि आपने हमारे मुल्क में आए, रेड की, चले गए. जी हाँ, ज़रदारी साहब. That when Obama called Zardari after the Osama bin Laden raid, according to his book, कि वो बेचारे उसको फिक्र लगी हुई थी कि मुझे how do I'm gonna face with them, कि मैंने इनकी sovereignty जो है उसको मैंने वो किया है, what do you mean, violate किया है. तो वो ही वॉज कंसर्न के फ़ोन करेगा तो जरदारी साहब नाराज़ होंगे, ये होंगे, लेकिन वो टिपिकल जरदारी साहब दांत निकाल के यूँ जैसे दांत निकाल के बैठते हैं कि और मुबारकबाद दे रहे, बजाय ये कि आपने ऐसा क्यों किया, मुबारकबाद दे रहे हैं ओबामा को कि मुबारक हो कि आपने उसामा बिन को ला दिया, मार दिया. देन ही डिडंट टॉक अबाउट इट कि आप क्यों आए, किस तरह आए, किससे पूछ के आए. डिडंट टॉक अबाउट इट, एंड इवन ओबामा वाज शॉक्ड अबाउट विद दैट एटीट्यूड. सो नाउ हम टॉकिंग अबाउट कि नवाज शरीफ जो है इज़ गद्दार है और आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, जो किसने हरकतें की हैं, जो राज निकाल रहा है और बता रहा है लोगों को, वी शुड यूज़ आर्टिकल 6 अगेंस्ट हिम. लेकिन व्हाट अबाउट जरदारी? ऐसे बेगैरत हम लोग लीडर हैं, दिस इज क्रेजी. इतनी सी जो होती नहीं, इतनी सी बेगैरत नहीं इनमें.
कि बनावट के लिए, दिखावे के लिए कर देते कि ऐसा क्यों किया, ही डजंट केयर, कैसे होगी। आई कैन अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं कि चाहे मोस्ट ऑफ स्टॉप बिलीव कि उसने ज़रदारी ने अपनी बीवी को मारा है, इसने ये किया है, शहनशाह को मारा है, इसको मारा है, उसको मारा है। I kind of believe most of it, but if somebody told me that Zardari would be like Nawaz Sharif, I'd probably be a little bit hesitated to believing in that. But we just heard from horse's mouth कि वो मैंने बोला अपनी बुक में कि ऐसा ऐसा ज़रदारी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुबारकबाद वगैरह दी है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती यार, हमारी ISA जो है, हमारा इंटेलिजेंस, ISA by the way is supposed to be, which is I've seen a lot of time, it's one of the best intelligence agency in the world, even better than better than CIA. हालांकि ISL का इतना बजट नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, बट उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट. So they're one of the best intelligence agencies in the world. So they don't have any skeleton from Zardari. I'm pretty sure they do. Why don't they use the skeleton and shut him up and put him back in some corner? निकालें इसको पॉलिटिक्स से, जहर है. या फिर why, for whatever the reason why हमारी जो ISI जो है और जो establishment जो है, why they let him be like this? Why they let him still tolerate कर रहे हैं इसको? किस वजह से? क्या उसके पास भी कोई blackmail वगैरह कर रहा है? What is he gonna do? Why can't we get rid of this leaders like that, Nawaz Sharif or Zardari? Why can't we do that? What we are afraid of? When we say we, why ISI or establishment are afraid of? Why can they just get rid of him? एक उसको सुनाए भाई, दो तेरी कैसेट्स पड़ी हैं, वीडियो पड़ी हैं, ये दिखा के बाहर निकालेंगे, चुपचाप बैठ जाओ कोने में, otherwise we're gonna leak these videos and audios. Nawaz, by the way, I don't know if you guys know that शहनशाह जो कि यूँ कर इशारा कर रहा था उसके जलसे में बेनज़ीर को, he was supposedly, I personally know that in a way, कि वो बेनज़ीर भुट्टो उसको भाई कहती थी, उसको मुँह वाला भाई कहती थी शहनशाह को, and इस भाई ने दूसरे भाई के साथ मिलके और ये हस्बैंड के साथ मिलके उसका काम तमाम किया, and उसी वजह से शहनशाह को भी दौड़ा दिया, because the best crime is it don't leave any witnesses, and that's what Zardari did. He's an excellent in that area. So उसने जो थे सबको मरवा दिया, खाली ये बचा रहा अपना लियारी वाला, क्या नाम है इसका, क्या नाम है दैट, जो कि अभी एजेंसीज के पास है, और वो पैसे बच गया. I don't know, probably he was outsmart Zardari, वरना Zardari इसको भी नहीं छोड़ता. So I just don't understand, why don't we just get rid of these both families, the Zardari family and Nawaz Sharif family. You just Bilawal, he's not bhutto. Fatima Bhutto is a bhutto. Zardari is not, he's a Zardari. Bilawal is Zardari, there's no bhutto. और हमारी कौम भी इतनी बेवकूफ़ है, इसके नाम में लगा दिया भुट्टो, तो हाँ जी भुट्टो बन गया. Don't have that common sense क्या, he is not a bhutto. Well, थोड़ा भुट्टो का blood, but he's not a Janasheen. If it's anything, Fatima would be Janasheen. First of all, we shouldn't have Janasheen. We shouldn't have family dynasties. जिस तरह Kennedys यहाँ पर हैं, we shouldn't have that. But as I said, the शुरू के एपिसोड में मैंने बोला था कि हमारी कौम बेगैरत है, तो बेगैरत कौम पे ऐसे बेगैरत लीडर ही इंस्टॉल किए जाते हैं. Shame on these kind of leaders and shame of these kind of people or these kind of qawm who let them rule them. Imran Khan, finally he start coming out. हम तो बोल के थक गए थे यार कि लोगों में जाएं, लोगों में मिलें, अपने जो वज़रा हैं, they are not doing it. You need to go on to public, अपनी आंखों से देखो क्या हो रहा है, अपने कानों से सुनो क्या हो रहा है. Seems like he's start doing a little bit, and I hope he does it more and more. Personally, I like Imran Khan because not what he was, what he's intent to do, what he's trying to do, versus Nawaz Sharif or Zardari. उनको तो अपने खानों से फुर्सत नहीं होती है. By the way, actually, I just got this audio from some retired lieutenant general. He made this. He's told this small story to one of his colleagues. You should listen. It's very interesting. Now, again, as I heard it from the stalwarts and from the horse's mouth, when Imran Khan took over as a prime minister, naturally, the visits were already planned for him to go and get the briefing at the GHQ and to go and get the briefing at
ISI. So he went over there, and generally the planning and the briefing is planned for about 1 hour or so, but they always have they work out on the options, the people who have to brief, maybe 1 hour, 2 hours, 3 hours or so, maximum, that is the time. तो उससे पहले फौज हमारी आदि थी जनाब नवाज शरीफ साहब की, जो आया करते थे GHQ में, तो वो 10 मिनट की ब्रीफिंग नहीं होती थी, वो कहते भाई कुछ खाने पीने के लिए है। तो उनको एक बार, जिसको फौज में हम हर फ़याम में और फ़याम में कहते हैं टी ब्रेक, तो वो टी ब्रेक उनको सर्व की गई। तो अभी 10 मिनट नहीं ब्रीफिंग को गुजरे थे, एंड ही वाज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द मैप और द ब्रीफिंग। तो उन्होंने एक जल्दी से उछल के एक उठाया, not that he was very hungry and all that, he was tempted to। ये बंदे की पर्सनालिटी शो करती है कि वो किस किस्म का इंसान है और वो कितना कंसंट्रेट किधर कर रहा है। तो उन्होंने चाय के लिए वो एक आध सैंडविच उठाया। तो Of course, because he was खाते पीते घराने से थे, so that's why he was always wanted to eat. I'm sorry to interrupt, I had to say it. देखा तो उन्होंने सेकंड सेंटेंस वाज कि यार वो ये ठीक है, मैं समझता हूँ, सारा कुछ समझ गया, मुझे ये बताइए कि ये यार ये कुक हमें नहीं मिल सकता? व्हाई नॉट इन द प्रीमियर हाउस वी कैन मेक सच डिलीशियस सैंडविचेस। तो वैसे ही फौज ने सोचा होगा कि शायद इमरान खान साहब भी कोई आधे घंटे बाद कहेंगे, जेंटलमैन, the briefing lasted, which was planned for 1.5 hours to 2 hours, it lasted for 6 hours at GHQ, and the people who were involved in giving the briefing, I swear on Allah, when they came out, one of them I talked to, because he was my student, and I talked to, and he confided into me, sir, आज मजा आ गया briefing देने दा ते briefing लेने दा। Because he started asking so many questions and his understanding of the situation developed, because he was interested. He was interested, and चाहे उसके सामने पता नहीं कितनी बार ठंडी हुई या कितनी बार सामने उसके आया कुछ खाने के लिए, he did not munch anything, he just concentrated on the briefing. And he took 5 to 6 hours to understand the first briefing. And then he was to go for Appara, where he went, and again the time was planned that in 3 hours they would get over with him. It took about 6 to 8 hours. Imagine the interest of the gentleman. Let's not doubt him. He's honest. He's go-getter. He wants Pakistan to grow. अब उसकी पॉलिसीज का असर जो है वो होना शुरू हुआ है और नजर आना शुरू हुआ है। ऊपर से कोविड ने मार दिया पूरी दुनिया को। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो इसके ऊपर कामयाब हो जाएगा। और मेरी दुआ है, मेरी दिली दुआ है, हम अभी दुआ ही कर सकते हैं इस एज में, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको मौका दे, मौला करीम उसको मौका दे कि वो इस मुल्क के लिए जो वो चाहता है वो कर सके। उसका कोई रिश्तेदार, कोई इसका बेटा, कोई इसका भांजा, कोई इसका दूसरा तीसरा पॉलिटिक्स में नहीं है और ना उसकी सीट संभालने के लिए तैयार है। It only happens in PPP, it only happens in JUI, it only happens in नून शरीफ और शीम शरीफ, शर्मिंदगी शरीफ जो है, ये it happens onto them. I'm sorry if I would be calling names and please do forgive me if I call them some meme, name, chum, or so, whatever I call them, please do forgive me. So, that's the reason army loves him. People love him. Imran Khan. I have no problem with Imran Khan. I think he's very genuine and very honest person. But what he needs to do, he's kind of naive. What people's after आसपास जो लोग रखे में हैं, that's what I have a problem with. Imran Khan has a good intention. He wants to do the right thing. But the people around him, they're just like ताली के बैगन. कभी पीपी में थे वो लोग, फिर नवाज शरीफ की पार्टी में आ गए, अब यहाँ आ गए.
That's what he needs to get out of it. Imran Khan का issue है कि he believes in electables. Fair enough, you did the first time you believe in electable, but अगर आप इस दफ़ा electable लेने के बाद अगर आप काम करते हैं and next time you would not need an electable, क्योंकि पब्लिक देखेगी कि वो काम कर रहे हैं, आपने काम किया, so it doesn't matter. जिस तरह एक ज़माने में MQM में अगर अल्ताफ़ ने कुत्ते को भी खड़ा कर देता था उसको वो जीत सकता था, because the way it was perceptions का बना हुआ था. सो अगर इमरान खान ने अभी इस्तेमाल किए हैं इलेक्टेबल्स तो अपनी पावर में आने के लिए और मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, फेयर इनफ, विल गिव हिम ब्रेक, बट देन डू द जॉब एंड गेट आउट ऑफ दीज इलेक्टेबल्स जो कि ना थाली के बैग इधर से उधर से उधर से उधर उधर से उधर उधर घूमते रहते हैं. सो I wish him good luck also, but only problem I have that he is not doing fast enough. He is doing too slow. He is being a little bit politician. He needs to get out of this politician out of him. Of course, he is politician, but he's not. He's trying to be a politician. And सबको खुश करने के चक्कर में लगे पड़े हैं. So I don't believe he should do that. He should be doing what needs to be done. Problem it is because की majority नहीं है Senate में और अपना Parliament में. But again, just do the right thing. When you start doing the right thing, अगर तुम ड्रॉप भी हो जाते हो तो तुम्हें कोड वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है. लेकिन अगर if you do the right thing, people will bring you back. They will be with you. But you have to show the people that you are just not talk. You are capable and you have a will to do it. और ये मरियम नवाज की क्या डील है? She is convicted. Yeah, she's not, or she's out on the bail. Yeah, she's out on the bail and she's making all this noise, जलसे जुलूस वगैरह. उसकी वो बेल उसने तो खाली ली थी ना अपने वालिद की खिदमत करने के लिए, राइट? वालिद को गैविद काउट से हो गया तो बेल क्यों नहीं कैंसिल हो रही उसकी? Why is they not putting her back into the jail? Why? Again because she is Nawaz Sharif's daughter. So बड़ा लोग जुर्म करें तो उनको तो बेल हो जाती है, पाकिस्तान से भाग जाते हैं या इस तरह बाहर घूमते फिरते रहते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. I don't even care what government के ख़िलाफ़ said. What she's saying about military, that pisses me off. ये तुम्हारा जो पाकिस्तान जो बैठे हो ना, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो कर रहे हो मिलिट्री की वजह से बैठे हो कि मिलिट्री ने पाकिस्तान को एक पीस में रखा हुआ है. खुदा न खासा ना पाकिस्तान होता, अगर मिलिट्री नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं होता. पाकिस्तान नहीं होता तो हुकूमत क्या कर रहे होते? इंडिया में जाके हुकूमत कर रहे होते हैं. इंडिया वाले इतने जूते मार के तुम नवाज से निकालते हैं तो पता चलता. एंड यू कीप लाइक बैड माउथिंग मिलिट्री की, मिलिट्री ये है, मिलिट्री वो है, चीफ ऐसा है, ISIS ये IS है ऐसा है. वाई नॉट दे नॉट कैंसलिंग हर बेल? वाई दे नॉट अरेस्टिंग इट? शी इज़ बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो वो इंस्टिगेट कर रही है कि लोग उठें खड़े हों एंड गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट और मिलिट्री. Why nobody's doing anything? Why establishment's not doing anything? Why Imran Khan's not? Or forget everybody. Why the court is not cancelling his bail? What they waiting for? छोटा बंदा तो उसको उठा के अच्छे तरह मार के अंदर डाल दिया होता है. And she's like out there and breaking all the laws, and especially now COVID, and they want to do jalsas. Really? I'm glad that Imran Khan ने जो कहाँ का साहिवाल का कहाँ का जलसा उन्होंने कैंसिल किया. That was a good move. And so at least make an example out of it. So कि हमने किया है तो तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं है. Don't give them any MKM और नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को जलसे, किसी को भी जलसे की इजाज़त नहीं. It's a COVID out there. This is second wave, I'm telling you, is worse than the first wave. So I think they should just cancel her bail and just throw her in the jail, and real jail. वो जो VIP जेल वाले जेल नहीं वाले जो चक्की पीसिंग that वाली जेल, चक्की पीसिंग जेल, उसमें डालना चाहिए. बाद में एक चीज़ याद आई कि because a lot of people have asked me कि बल्कि I'm gonna apologize for that कि जब मैं ये शो करता हूँ तो ना मेरी इंग्लिश सही आती है ना मेरी उर्दू सही आती है, क्योंकि I get confused between those कि उर्दू बोलूँ या उर्दू को छोड़ के इंग्लिश बोलूँ, and because of that मेरी vocabulary की ऐसी तैसी हो गई है. तो I apologize, I'm trying to fix it. हमारी हालत तो वो है जैसे एक धोबिया कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो हम ना वहाँ के हैं ना यहाँ के बीच में लटके हुए हैं. अगर हम खाली इंग्लिश बोलें तो सही चलता है, लेकिन उर्दू तो वैसे ही ख़राब हो गई है, और इंग्लिश उर्दू बोलें तो इंग्लिश का भी अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है और उर्दू का भी अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है. बट I'm working on it and hopefully I'll fix it soon enough. Okay, I apologize for that. But our judicial system, मुल्कों की कामयाबी की जो सुतून होते हैं वो दो चीज़ों पर खड़े होते हैं, उनकी लीडरशिप पे और जुडिशल सिस्टम पे. लीडरशिप भी इमरान खान देखें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो अल्लाह हाफ़िज़ जो
जरदारी के ज़माने में और नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ था। एवरीबडी नोस क्या हुआ था। अब दूसरा जुडिशल सिस्टम, जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है वो बताता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना या तो खाली बोलते रहते हैं या कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज देयर इज़ अ माफिया बिहाइंड देम ऑल्सो। बाकी जज हैं सारे करप्ट, मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट एंड दे वोंट दैट एनीथिंग, दे वोंट हैव उनका चीफ जस्टिस जो कुछ करने नहीं देंगे, वो क्यों करेगा तो वो उसकी टांग खींचेंगे। बट सम चीफ जस्टिस वांट्स टू डू समथिंग, दे नीड टू हैव balls, and doesn't look like any of chief justice we had, they had it, the top बातें तो बड़ी करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना घर साफ़ करें। ये काजी जैसे काजी का जो साफ किताब चल रहा है, व्हाट इज़ दिस? अगर वो कहता है कि मेरे पास जो मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये ख़रीदी है, प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, मेरे पास पैसे यहाँ से आए नहीं, ही कैन शो द ट्रेल ऑफ मनी, देन फेयर इनफ, इफ़ नॉट देन फाइंड आउट कि किस तरह है। एंड देन और बढ़ के इनके जो अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए मेयार आम लोगों से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द वन पीपल हु प्रोवाइडिंग अ जस्टिस टू कॉमन पीपल। तो उनका मेयार जो कॉमन पीपल है ना उससे भी ज़्यादा आगे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। एंड दे नीड टू, अगर इफ़ इज़ गिल्टी दे नीड टू मेक अ एग्जाम्पल आउट ऑफ इट एंड प्रूव इट। बट आई डोंट हैव एनी होप चीफ जस्टिस केस की तरफ से कि वो कुछ करें, क्योंकि उनको खींचे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक साल हो गया उसको भी खींचे जा रहे हैं। यार इट्स one of your guys, if he did is guilty, fair enough, if he's not guilty then इसको बरी करें। Why they playing games? Enough is enough. Just they need to fix, they clean their house. Last thing about ये अपने खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनका कल इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा प्यारे थे, उन्होंने बुला लिया कि अल्लाह ताला देख रहे थे ये कर रहे हैं, इतनी जो हरकतें इनकी ज़मीन पे बड़ी ज़बरदस्त हरकतें हैं, बट इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बोला यार ऐसे बंदे की मुझे ज़रूरत है, तो उन्होंने बुला लिया, सही किया। एज आई सेड इन माई ट्वीट के गॉड टुक दिस इन हिज ओन हैंड एंड फिक्स द प्रॉब्लम। तो पब्लिक तो नहीं कर सकी, इमरान खान भी नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला ने अपनी प्रॉब्लम खुद ही फिक्स कर दी और उनको अपने पास बुला लिया। Hopefully he's up there and be happy. And किधर हैं, जन्नत में या दोज़ख में, वो तो अल्लाह ही जानता है। If he did the right thing, then he should be in Jannat. But if he didn't, then he should go where he should go. That's all I have to say. I'm Shoaib Qureshi with Say Like It Is from New York. Khuda Hafiz.